निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्धात्मकं ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावद्भात साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्दभाग्यं जनानाम्। मुरलीधरा हे मनमोहना, मुरलीधरा हे मनमोहना, मुरलीधरा हे मनमोहना, मुरलीधरा हे मनमोहना, केशवा माधवा, केशवा माधवा, केशवा माधवा, केशवा माधवा, हे मुरलीधरा हे मनमोहना, मुरलीधरा हे मनमोहना, केशवा माधवा, केशवा माधवा, केशवा माधवा, केशवा माधवा, केशवा माधवा, देवाधिदेवा, केशवा माधवा, देवाधिदेवा, केशवा माधवा, देवाधिदेवा, केशवा माधवा, देवाधिदेवा, मुरलीधरा हे मनमोहना, मुरलीधरा हे मनमोहना,
केशवा माधवा देवाधिदेवा केशवा माधवा देवाधिदेवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे
जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोपाल हरे हरे श्री श्री हरे गुरुदेव, हम प्रोफेसर वंदना सिंह जी, माननीय कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का हार्दिक स्वागत करते हैं। वे लगातार 5 वर्षों से स्टैनफोर्ड टॉप 2% साइंटिस्ट में शामिल प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। आज वे जल पर मंत्रों के प्रभाव विषय पर अपना विशेष प्रस्तुतिकरण देंगी। जय गुरुदेव। गुरु जी की ब्लेसिंग से इन पूर्वांचल यूनिवर्सिटी I have set up a IKS research group in which the faculties of different departments are engaged in doing this research work, and we had found that the effect of mantras on the water, we use the tap water under the identical conditions. Some samples we abhimantrit with some mantras. One of the mantras was Om Namah Shivaya and Gayatri mantra and 2 unknown mantras. And we could notice that after the abhimantran, not even pronouncing the mantras, I just thought the mantras and looked at the water, and the FTI spectra, which is a technique which measures the vibrational energy levels of the molecules. So these energy levels are quantized, and the infrared spectrum is absorbed against this quantized difference of the energy levels, and we could find the shift in the peak. There are 2 types of the vibration. One vibration is the stretching vibrations, and the other vibrations are the bending vibrations in any molecule. So water molecule is polar in nature, so both types of vibrations are present there. And when we just notice the effect of these mantra, the shifted to the shorter wave number, indicating that the water is clustering. And as Gurudevas told us in the morning that water has memory, that we also recognize that water is having the memories of these mantras. Since our body is carrying more than 60% of water, so thinking of mantras are even affecting our body. So this also affected the zeta potential of the water and the size of the colloids present in the water. So we also made the zeta potential studies. So you can see the peaks are shifting towards the shorter wave number. So towards the shorter wave number, there are 2 peaks. One is Om Namah Shivaya.